Okay, the question is the equation of the curve y is equals to x divided by cos square x for x between 0 and 1 by 2 pi. At the point where x is equals to a, the tangent to the curve has a gradient equal to 12. You have to show that a is equals to cos inverse third root of cos a plus 2a sin a divided by 12. Okay, so as we have to find tangent, we have to express equation for tangent. Y, this expression y is equals to x divided by cos square x. We differentiate this first with respect to x, so we will get dy divided by dx. We will get this as cos square x times 1 minus x times 2 times cos x times minus sin x. Yes or no? And then whole divided by, we get cos raised to 4x. Okay, we simplify this. So here it is cos square x, then this minus minus plus, it is 2 times x into cos x into sin x whole divided by cos raised to 4x. Then we simplify this further, this one cos will come out, so I have cos x plus 2x sin x divided by cos cube x. This is your dy by dx. At we know that at x is equals to a, we know that at x is equals to a, this gradient is equal to 12. So therefore you have 12 is equals to cos a plus 2a into sin a divided by cos cube a. Okay, so we rearrange, we will get cos cube a as a subject, so cos cube a will become cos a plus 2a sin a whole divided by, here it is 12, and therefore we have cos a is equals to third root, you get third root of this cos a plus 2a sin a divided by 12. Okay, so therefore the value of a we get, I get, therefore finally we have a is equals to cos inverse third root of cos a plus 2a sin a divided by 12. Okay, so we get this expression. Now here second part is verify by calculation that a lies between 0.9 and 1. So what we do, as this a is equals to this whole expression, if I say a minus, if I say a minus cos inverse third root of cos a plus 2a sin a divided by 12. Okay, so for the correct value of a, for the correct value of a, this whole thing should come to be 0. I will consider this as a function a, f of a, function of a. Okay, now if I will not choose correct value of a, then my answer is not going to be 0. Okay, so that means if I choose a as 0.9, if I choose a as 0.9, I will get f of 0.9, and this is equals to 0.9 minus cos inverse third root of cos of 0.9 plus 2 times 0.9 times sin of 0.9 divided by 12. Okay, right, so this we will get. So first convert your mode to radian, and then find out cos 0.9 plus 2 times 0.9 times sine of 0.9, and whatever result we get divided by 12. Okay, whatever result we get, we divide, we take its power 1 by 3, take power 1 by 3, and whatever result we get, we take its cos inverse, shift cos inverse of answer. Okay, whatever result we get, we subtract it from 0.9. So 0.9 minus your answer.
we are getting something like minus 0.08, okay, which is less than 0. Okay, so when I took a as a 0.9, I get something which is less than less than 0. Okay, let me once again cross verify. Cos of 0.9 uh, plus 2 times 0.9 times sine of 0.9, that whole divided by 12, that whole power 1 divided by 3, that means cube root we have taken, this whole cos inverse, and then 0.9 minus. So I get a negative value. Then I will find f of 1. What is f of 1? So similarly, f of 1 will be here. I have cos of 1 plus 2 times plus 2 times 2 times 1 into sine of 1, that divided by 12. Whatever result we get, we take a cos inverse of answer. Have I take okay, so here I get 0.035. F of 1 I get 0.035, which is greater than 0. Now for the correct value of a, I should get answer 0. Here I am getting answer between if I take 0.9, I get answer negative, and when I take x is equals to 1, I get a is equals to 1, I get a positive value. So that means a will lie between. So therefore as your f of 0.9 is less than 0 and f of 1 is greater than 0, so therefore a will be in between 0.9 and 1. So a आपका क्या होगा, 0.9 और 1 के बीच में होगा. सेकेंड पार्ट है कि यूज़ द इटरेटिव फॉर्मूला बेस्ड ऑन द इक्वेशन इन पार्ट ए टू डिटरमाइन द ए करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, गिव द रिजल्ट ऑफ ईच इटरेशन टू द 4 डेसिमल प्लेसेस. ओके, अब यहाँ पर देखिए कि जब हमने 0.9 यूज़ किया ए का वैल्यू, तो हमें आंसर 0 तो आया नहीं. ओके, हमें आंसर 0 नहीं आया, बट ये जो वैल्यू है ना, दिस वैल्यू विल कम वेरी क्लोज टू 0. ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इटरेटिव फॉर्मूले में यहाँ पर एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे ए माइनस थर्ड रूट ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस 2a टाइम्स साइन ऑफ ए डिवाइड बाई 12, ये हमारा होगा. और यहाँ पर इटरेटिव फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, हम इसे कहेंगे कि जो an+1 है आपका जो वैल्यू होगा, नेक्स्ट वैल्यू आपको क्या लेना है, नेक्स्ट वैल्यू आपको ये लेना है ना, राइट ना. यू हैव टू टेक नेक्स्ट वैल्यू एज a माइनस थर्ड रूट ऑफ कॉस a प्लस 2a. नहीं, मैं थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ. एक्चुअली ए इज इक्वल्स टू इटरेटिव फॉर्मूले में जो हमारा ए था, ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ए इज इक्वल्स टू ये आया कॉस इनवर्स थर्ड रूट ऑफ कॉस ए प्लस 2a साइन ए होल डिवाइड बाई 12, बराबर. ये आपका ए आ गया. अब यहाँ पर इटरेटिव फॉर्मूले में ये ए को an+1 लिखेंगे, यहाँ पर ये an लिखेंगे, ये an लिखेंगे, ये n लिखेंगे. ये मेरा इटरेटिव फॉर्मूला हो गया, राइट है. यहाँ पर मैं 0.9 अगर कंसिडर करूँ, an+1 an की वैल्यू 0.9 कंसिडर करूँ,
ए एन की वैल्यू और सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए एन प्लस वन मिलेगा। तो यहाँ पर फॉर एन इज इक्वल टू ज़ीरो, फॉर एन इज इक्वल टू ज़ीरो हमारा जो ए एन है ये 0.9 ले लेते हैं, ठीक है, ए एन 0.9 ले लेते हैं। तो आपको जो फर्स्ट वैल्यू मिलेगी ए वन मिलेगी, ए वन, ओके, ए वन विल बी इक्वल टू, ये क्या होगा, ये कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स थर्ड रूट ऑफ कॉस ऑफ 0.9 प्लस 2 इंटू 0.9 इंटू साइन ऑफ 0.9 डिवाइड बाई 12। ओके, तो ये जो आंसर है दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हम फॉर्मूला ले लेते हैं। फॉर्मूला है कॉस ऑफ 0.9 प्लस 2 इंटू 0.9 इंटू साइन ऑफ 0.9 साइन ऑफ 0.9 होल डिवाइड बाई 12 एंड इसका हमें पावर करना है, जो भी आंसर है इसका हमें पावर करना है 1 डिवाइड बाई 3 और जो भी रिजल्ट आता है इसका हमें क्या करना है, कॉस इन्वर्स करना है, कॉस इन्वर्स ऑफ आंसर। बड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो ये ए वन की वैल्यू आती है 0.98 की वैल्यू आती है। तो ये ए वन की वैल्यू हो गई। हम क्या करते हैं, ये जो ए वन की वैल्यू है इसे कैलकुलेटर में सेव कर लेते हैं। ओके, अब सेव कर लेते हैं, फिर इसे यूज़ करें। तो कॉस ऑफ जो हमने वैल्यू सेव की प्लस 2 इंटू जो वैल्यू सेव की इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा ए, मीन्स जो वैल्यू स्टोर की है हमने वो ले रहे हैं, द होल डिवाइड बाई 12 द होल पावर 1/3। जो भी आंसर आया शिफ्ट कॉस इनवर्स ऑफ योर आंसर। तो ये वैल्यू आ गया 0. ये ए वन को यूज़ करके जब हमने ए टू फाइंड आउट किया तो ए टू आ गया 0.9673। अभी ये वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। ओके, और इसे यूज़ करेंगे, ए थ्री फाइंड आउट करेंगे। सो योर ए थ्री विल बी, ए थ्री इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ योर आंसर, थोड़ा ये प्रोसेस आप कंटिन्यू करेंगे एंड यू विल फाइंड दैट कि आफ्टर 2 डेसिमल्स द रिजल्ट इज़ नॉट वेरिंग आफ्टर 2 डेसिमल्स, तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 0.98 आने के बाद मैंने ये गलत किया है, शायद 0.96 नहीं आना चाहिए क्योंकि हम देख रहे हैं वैल्यू 0.9 और 0.1 के 9 और 1 के बीच में ना, नहीं आ सकता है 0 पॉइंट, ये भी आ सकता है बट क्या प्रॉब्लम हो गया, कॉस ऑफ ये पहले तो मुझे देखना पड़ेगा ए क्या है। ओके,
So cos of a plus 2 times a times sin of a. ओके, ये जो भी वैल्यू आई दैट डिवाइड बाय 12, ये जो भी आंसर आया इसका मुझे पावर 1/3 निकालना है। जो रिज़ल्ट आया उसका मुझे कॉस इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ये कॉस इनवर्स यहाँ पर आता है 0.9707। फिर A4 फाइंड आउट करेंगे एंड सो ऑन। तो ये आपका रिज़ल्ट इस तरह से आप कैलकुलेट करते जाएंगे। तो अराउंड 0.975 ये हमको रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो इटरेटिव मेथड इस तरह से यहाँ पर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन वापस एक बार देख लेते हैं कि गिव द रिजल्ट ऑफ ईच इटरेशन अप टू 4 डेसिमल एंड ए को करेक्ट 2 डेसिमल तक लिखना है। तो हम देख रहे हैं कि 2 डेसिमल तक यहाँ पर जो वैल्यू है पहले 9.8 थी, फिर 9.6 है, फिर 9.7 हो गई। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं तो वो भी 9.7 के आसपास रहती है। तो फाइनली बाय इटरेशन हम यहाँ पर कहते हैं ए इज इक्वल टू 0.97 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये हो गया रिजल्ट।